Hey guys, welcome back to my channel. So today we will study about balanced diet. Do you know what is balanced diet? Don't know? I wait about that. So a diet that contains all the nutrients in right amount is known as a balanced diet. Okay. So this is a chart which is explaining about what balanced diet. Okay, so let's study about it. Yeah, so first is oily food. It is fat containing food. Fat is stored in our body as in the form of reserve food. Like अगर आपकी बॉडी को कभी 2 to 3 days खाना ना मिले तो आपकी बॉडी का जो एसिड होता है वो आपके फैट को खाएगा. ओके, कुछ दिन तक जितना आपका फैट रहेगा उतना फैट आपको उतने दिन आप रह सकते हो. लाइक आपका जो बॉडी एसिड होगा वो आपके फैट को खाएगा जिससे आप पतले हो जाओगे. ओके, सो फैट कंटेनिंग फूड्स आर oil, butter. These are oily foods. Oily foods are fat containing. अगर आप ज़्यादा oily खाएंगे ना मोटे हो जाएंगे. लाला जी ठीक, तोंद फूल लाएगी आपकी. ओके, meat and dairy products. Okay, meat and dairy products are protein containing food. Okay, they are energy giving foods. Okay, energy giving or bodybuilding. Okay, bodybuilding food. The examples are egg, fish, milk, etc. Like अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी बॉडी बिल्ड कर सकते हैं. एंड आगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. They are vitamins and mineral containing foods. Okay. Their example is mango and banana. Okay. They give us energy. Okay. They give us energy. And last is grains. Okay. Grains are carbohydrates. Carbohydrate containing foods. Grains. Okay. They give us energy, too many energy. Okay, its example is cereals. Okay, so let's study it 2 times. Okay, वैसे एक बात बताऊं, अगर आप बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करोगे ना तो या तो आप मोटे हो जाओगे लाला जी की तरह या तो पतले हो जाओगे बिल्कुल और वीक हो जाओगे. ओके, So balanced diet 2 बार समझो. Oily and their amount. Oily food means fat containing food. आपको सबसे कम खाना चाहिए. उसके बाद मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक थोड़ा सा ज़्यादा है ना. फैट कंटेनिंग फूड्स तो बिल्कुल कम. मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा. ग्रेन्स तो आपको सब ज़्यादा खाना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. दे गिव अस too many energy. Okay, so people who do lot of physical work, okay, they need carbohydrate giving food. And people who do not do lot of physical work, they need protein giving and vitamin mineral containing food. Okay, they need for their mental health. Okay, and oily food सबको लेना चाहिए बट थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. ओके, चलिए अब इस चार्ट को 2 बार समझिए वरना या तो आप एकदम मोटे हो जाएंगे या तो एकदम वीक हो जाएंगे. ओके, ऑयली फूड, fat containing. Example, oil and butter. Their amount 2
too little. Okay, too little. In too little amount. Oily, fat containing, example oil, butter, etc. Meat and dairy products, protein containing food. मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से फूड होते हैं? प्रोटीन कंटेनिंग फूड होते हैं. इनके एग्जांपल्स हैं एग, फिश, मीट, मिल्क, पनीर, चीज एटसेट्रा. नेक्स्ट, fruits and vegetables. They are vitamin and mineral containing foods. Example, mango, banana, carrots, spinach, leafy vegetables, green vegetables. They are also very important for our body. Okay. Last is grains. They are carbohydrate giving food or energy giving food. Example, cereals. This is last time. Oily, fat containing, example oil, butter. Meat and dairy, protein containing, example egg, fish, meat, milk, paneer, cheese, etc. Fruit and vegetable, vitamin and mineral containing, egg, example mango, banana, carrots, tomato, etc. Grains, example cereals, carbohydrate giving food. Okay, so अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें. आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इसे सब्सक्राइब करें. अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. हमेशा बैलेंस डाइट फॉलो करें एंड स्टे फिट, हेल्दी एंड हैप्पी. योर ओन क्यूट टीचर आरू.